So hello everyone, I am Kinshuk Parashar and today we are going to learn a little about space technology, that what is this all about, what are its applications, what are the prospects which is there, and then we are also going to talk about India's space policy. So here our orientation will be mainly towards, suppose if there is a question in mains examination about space technology, then what we have to do, how we have to answer that. So here we will not go into the minute details like what is launch vehicle, what is the orbits and all other things, but we will simply see that like what is the application of it. If we are talking about a country like India, we are spending crores over the space tech. We are spending huge money over the space technology. So what is the benefit of it? What is the benefit to the common people? Okay, and then we have also got India's space policy. So we will also try to analyze that what are the parts of it, what are the vision of it, what is the vision of it, what is the strategy, how it is going to help the people. Okay, so let us talk about this thing, that what is the space technology and its component. See, when we talk about the space technology, first thing is what exactly is this? See, space technology is nothing but the application of the engineering part. Okay, means suppose that if we are normally looking at a space, okay, then if we talk about the space technology, it simply means how we are using the different principles of physics, chemistry or other related aspects, the engineering aspects, into harnessing the space, into exploring the space, into using the space for our certain purposes, maybe for navigation, maybe for information about the weather and all of the related aspects, sometimes for resource monitoring, okay, sometimes for disaster management. So it is simply like application of the engineering principles for the design, development, manufacture, operation and for the devices and system for space travel and exploration. Okay. So it is a very wide, or it is a very broad term, space technology. It is not simply like we are putting some satellites. Okay. Space technology also means the way we are exploring the different types of planets. Like last year, you might have seen we have this James Webb Space Telescope. So this James Webb Space Telescope is providing us insight into how this entire universe has unfolded, how this entire universe has been formed. Okay. तो स्पेस टेक्नोलॉजी हमें इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। किस तरीके से हम स्पेस में सैटेलाइट्स का यूज करके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से हम सैटेलाइट्स का यूज करके वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं या फिर रिसोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लोगों तक टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के डेफिनेशन में आप इसको काउंट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमें प्लैनेट्स को देखना हो, यूनिवर्स को स्टडी करना हो, कम्युनिकेशन सिस्टम को हो या ह्यूमन एक्टिविटीज को, इन सभी में इसका यूज किया जा सकता है। क्या तो अगर हम स्पेस टेक को डिफाइन करना चाहें तो इसे बोल सकते हैं कि एनी सच टेक्नोलॉजिकल एडवांस और टूल दैट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर यूज इन आउटर स्पेस, okay, and it can be for communication, navigation, exploration or any other purpose like that. Okay. So that is basically our space technology. अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट्स होते हैं, तो नॉर्मली व्हाट वी सी दैट समटाइम्स वी आर हैविंग सम लॉन्च व्हीकल्स. Launch vehicles are those vehicles which are used to launch certain satellites or certain objects or to place certain objects in our outer space. Okay. जैसे अगर हमें सैटेलाइट भेजना हो, अगर हमें कोई प्रोब, कोई ऑर्बिटर भेजना हो, कोई रोवर को अगर किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी मून पे या किसी भी अलग सैटेलाइट्स पे भेजना हो, तो वहां पे हम जो व्हीकल्स का यूज करते हैं दैट इज आवर लॉन्च व्हीकल्स. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हैज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. देन वी आल्सो हैव GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. वी आल्सो आर डेवलपिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिससे कि कॉस्ट जो है, एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. Then there is another component called as satellites. So satellites are what? We are having so many artificial satellites. Satellites are certainly satellites are simply some objects which have been put for some specific purpose, some devices which have been put for certain specific purposes. ऐसे इनका काम हो सकता है कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इनेबल करना, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पहले एब्जॉर्ब करना, फिर ट्रांसमिट करना. कम्युनिकेशन जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करना, उनको प्रॉपर्ली रिसीव करना, ताकि कम्युनिकेशन एनेबल हो पाए. okay. हमारे वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में चल रहे जो डिफरेंट चेंजेज हैं उनको स्टडी करके देन हमें एक
रिजल्ट देते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी also try to predict that what will be the weather condition. Okay, it also helps in understanding कि ओजोन लेयर कितना डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर की डेंसिटी क्या है. इन सारी चीजों को हमें सैटेलाइट्स प्रोवाइड कर सकता है. चाहे वो रिसोर्स की मॉनिटरिंग हो, चाहे हमें अगर रिसोर्स के बारे में मालूम करना हो, उसके लिए भी सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं. अगर हमें कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, वहां पे भी हम सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं. नेविगेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं. एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स यूज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्पसेस दे आर बीइंग डिजाइन्ड. अब इसमें एक और सिस्टम आता है, नेविगेशन सिस्टम. नेविगेशन सिस्टम क्या है? यू माइट बी यूजिंग जीपीएस. तो जीपीएस इज व्हाट? इट इज गिविंग यू entire scenario, entire scheme of things like how you have to move, how you have to navigate through the different areas, different routes. Okay, तो एक navigation system जैसे हम daily basis पे commonly use करते हैं, the common people which we are talking about. Okay, then at the same time अगर हमें flights को operate करना है, अगर हमें missiles को operate करना है, तो that also requires navigation which is being provided by the navigation system. इंडिया का अपना navigation satellite, अपना नेविगेशन सिस्टम भी है जिसे हम नाविक या IRNSS के नाम से जानते हैं. okay. अभी आपने प्रीलिम्स देखा होगा, तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था कि बाकी कौन सी कंट्री है जिसके पास अपनी नेविगेशन सिस्टम है. द आंसर वाज जापान. ओके, नाउ स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन इज सिंपली you can say that a human livable environment in the outer space. It is not in the like a very high earth orbit, it is in the lower earth orbit. Okay, तो यहाँ पे जो astronauts hai, they visit this space station, they live in this space station and carry out different types of experiments, different types of observation. तो space station is, आप इसे समझ सकते हो कि एक halt है, एक terminal है in our space where the astronauts can be placed and they can study different things, they can experiment on different things. तो ये हमारा एक स्पेस स्टेशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है विथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसमें यूएस भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, इवन अदर कंट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. देन अब हम आते हैं कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट. लाइक एक नॉर्मल हमें मालूम है कि स्पेस में सैटेलाइट्स को हम काफी ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर समटाइम्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस, समटाइम्स फॉर सिविल पर्पसेस. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने डायमेंशंस हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या रीजन्स हैं, क्या क्या एरियाज हैं जहां हमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देखने को मिलता है. द फर्स्ट थिंग इज communication. Okay, communication is one such part which is touching each and every common people. Okay, if you have to call your parents at home, or if you have to call your relatives or your friends, then this is what you are looking for. You have these satellites in our space which is enabling the communication between people. Okay, but ये इसका एक aspect है कि it is enabling the communication. This communication has been used for multiple purposes, and especially अगर हम बात करें इंडिया की, तो there are a large number of farmers. India is a farmer dependent country, and अगर farmers तक हमें ये information पहुंचानी है कि इस बार weather का क्या chances है, जो इस बार जो monsoon है वो कितना होगा, will it be sufficient, और क्या time period रहेगा, तो using our space tech we can also study that what can be the weather pattern, we can understand what will be the pattern of the monsoon. And then it is equally important to disseminate that information. It is equally important कि लोगों तक वो खबर पहुंचे. Then again, communication system comes into picture. We can have radio broadcast, we can have television broadcast, and then people can get to know about the market, people can get to know about the weather conditions and so many other things. Even अभी आप देखते हो कि there are different apps like M-Kisan, where also all these informations are being broadcasted to the people. If they have mobile phones, if they have smartphones, even SMS based services are there. Okay, so M-Kisan is one such approach where we are using the communication systems provided to us by the space technology to broadcast the important information to the farmers. Okay, so that is one such use. Then if we talk about the weather forecasting, like if we talk about ISRO, we have the INSAT, Indian National Satellite System. Now this is providing the valuable data for weather forecasting management system. Okay, we will get to know that what can be the chances of tornadoes, what can be the chances of any such cyclones or any such monsoon related things. What would be the pattern of precipitation? If you are reading the newspaper, आप देखते होंगे IMD की टाइम टू टाइम अपडेट्स आती हैं कि इस बार मॉनसून जो है वो 90% हो सकता है, 95% होगा, इट कैन बी मोर देन द एवरेज रेनफॉल. तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग brought to us by the space technology.
So that is also one of the thing. And in India, it is particularly important because you know that around 50 to 60% of Indian agriculture is dependent upon the rainfall. Okay. So India जैसे country में weather forecasting जो space tech के द्वारा provide किया जाता है, it is equally very much important. Okay. Then we can talk about the remote sensing. Okay. Now, you know that the countries, the different areas of the world, they are growing. And one of the basic requirement is if any city is growing, if any urban area is growing, if any village is growing, we need to have a proper planning. Okay. And for those proper planning, there is remote sensing satellites. Okay. Now, just ResourceSat, Cartosat, they are providing us high resolution images of the earth surface और उसकी help से urban planning हो या water resource management हो या environmental monitoring हो, ये सारी चीजें provide की जा सकती हैं. साथ ही साथ irrigation को कैसे farmers optimize करें, then land use planning में कैसे, ये साथ में लैंड यूज प्लानिंग में भी असिस्ट करता है कि किन एरियाज में हम किन टाइप के एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा पानी है तो हम पैडी रिलेटेड जो जितने भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, जहां पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई है वह कम है, वहां पे हम मिलेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट इनसाइट दैट हाउ वी कैन प्रॉपर्ली यूज द लैंड. देन देयर इज अनदर पार्ट दैट इज नेविगेशन. नेविगेशन जैसे हमने बताया कि अभी जो जीपीएस है, now suppose that if you are moving to a new city itself, if you are moving to, like, let us say that you are living in any part of Andhra Pradesh, then you decided that let's go to Chennai for certain maybe education, maybe some other purpose. So earlier it was quite much difficult in one sense that maybe if you are not knowing the language, if you are not knowing the different science and other things, so it may be difficult for you to navigate through the city. But now we have this navigation system. You don't have to ask anyone that how you have to reach there. You can simply Google that where we have to go. Okay, you will find out the maps in your phones, and using that you can navigate across the cities which you have never visited. Okay, so navigation is one thing which is again coming to the help of the common people. Okay, then education and research. Now we can see that we have a number of satellites in our outer space which is dedicated for this purpose. Okay, like right now, if you will find that from the 2005-2006, okay, you will find that we have emphasized upon the DTH services, direct to home services. So direct to home services means now again people are getting the information directly using the satellites in their homes. Earlier it was quite a difficult thing. People were not getting the information at the real time. So DTH services has enabled this dissemination of information in real time. And at the same time, we can see that there have been a lot of channels which have been exclusively dedicated for education. NCERT is running a lot of programs. Okay, there are a lot of programs on Prasar Bharati and other channels for students exclusively, for farmers also, for artisans also, and for so many other sections of society. तो इन सभी को हम education skills impart कर सकते हैं using the DTH services. Then there is also this SWAM platform, which is providing online, massive open online courses. Okay, so it is again providing the opportunity that we can enhance the skills of the people. We can give them right education in the comfort of their homes. They can become more skilled, and skill is one of the major requirement in the present time. तो आप स्पेस टेक के हेल्प से ये भी बता सकते हो कि वी कैन हेल्प इन स्किलिंग द पीपल, which is one of the major requirement of our economy at the time. Then we can talk about telemedicine. Okay, medicine, so, and especially you might have seen that during this COVID time, telemedicine has become one of the life-saving tools. Okay, if we can connect to doctors via different apps, via different broadcasting services, it is going to help a lot. There have been a lot of telemedicine services which have been established at block levels, at panchayat levels, जहाँ पे बड़े-बड़े doctors जो पेशेंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाउ यू कैन take precautions, how the disease can be treated. Even telemedicine is one thing which is used in even large hospitals, sometimes even in surgery and other things, or sometimes for simply understanding the case history of patients. So it may not be possible for all the very much well qualified doctors to go to each and every villages, but through this space technology, through the communication technology, they can reach there virtually and they can help in treatment. So that is another advantage. Then disaster management. It is one of the
again major thing which has become possible with the help of space technology. If you go back a little bit, like 1999 or even prior to that, you will find that in areas like Odisha, if there was a cyclone, there was death of thousands of people. Thousands and thousands of people used to die. Why? Because disaster management was lacking. Now, with the help of the space technology, we are able to assess the situation on the ground. We can take the images of the disasters which has struck at any place, and it can help us in managing these things. If floods are there, now we can capture that what is the actual extent of the flood. अब देखो फ्लड हो, ड्राउट्स हो, इन सभी कंडीशन को हम अपने सैटेलाइट्स के जरिए ट्रैक कर सकते हैं. And you might have seen this, that government is providing so much subsidy if the farmers are affected with floods or droughts. So now it has become very much easier to use the space tech to provide that remedy in a proper manner. So again, that is also one of the advantages of the space technology. Okay. It can also help in disaster preparedness, evacuation planning, post-disaster relief operation. तो इन सभी केसेस में, सभी इमरजेंसी केसेस में अगेन स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है. Okay. Then, अगर हम इंडिया के स्पेस पॉलिसी की बात करें, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, तो सबसे पहले हम इसके विजन को देखते हैं. इफ वी अंडरस्टैंड द विजन एंड स्ट्रैटेजी, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सो मेनी थिंग्स टू हेल्प द कॉमन पीपल. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम विजन की बात करें, तो सबसे पहला विजन है इंडियन स्पेस पॉलिसी का, टू ऑगमेंट स्पेस कैपेबिलिटीज. हाउ वी कैन डू दैट? We can enable, encourage and develop a flourishing commercial presence in space. अभी तक आप देखोगे कि इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है, it is largely dominated by the public sector. The public sector is dominating it. ISRO is one of the organization which is dominating it. तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का सिंपल कहना है कि now we will also have the non-government entities which will be working in that. स्पेस पॉलिसी में 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है. इसरो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाकी काम करेगा. इन स्पेस जो है अगेन कमर्शियलाइजेशन को प्रमोट करेगा, स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा. एंट्रिक्स इज ऑल्सो देयर. एंट्रिक्स पहले से था, जो इसरो के जो भी फॉरेन डीलिंग्स है, कमर्शियल डीलिंग्स है, उनको हैंडल करता था. सो एंट्रिक्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. बट देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, NSIL एंड देन इन स्पेस, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस they will also try to commercialize things. They will try to support the startups. They will try to have more commercial players or non-government entities in the space sector. तो commercial development को promote किया जाएगा. Second, use space as a driver of technology development and derived benefit in allied areas. ठीक है. तो space technology जैसे ही बेहतर होगा, जैसे लोग ज़्यादा invest करते हैं space technology में, the technologies which are used there can be used for other purposes. जैसे for example आप ले सकते हो, when we are developing the GSLV, okay, there we are using cryogenic engines. Now the same cryogenic engines can also be used for missiles and other things. Okay, the same fuel which is used there can be used for other automobiles and other things. Okay, maybe for better efficiency in a different manner, not in the same manner, but it has a better fuel efficiency. So we can look at the options. Okay, then pursue international relations and create an ecosystem for effective implementation of space application. Okay. अब देखो, space diplomacy is one of the key things right now. India ने पिछले 5 years में a lot of work has been done where we are trying to have this space diplomacy thing. We are trying to engage with other neighboring countries. आप देख सकते हो, Navik can provide the navigation services to some of the nearby countries. Our weather forecasting system can also help to understand the weather in the Indian subcontinent region. Okay, so they can help in promoting India as a responsible space power also. Okay, and it can also help in improving our space diplomacy. Okay, तो हमारा जो vision है Indian space policy का, it also talks about pursuing international relations. Okay, so that is also one of the part of it. And what is the purpose? See, vision is we will do this thing. But why? We will do this for the nation's socio-economic development, security, protection of environment and life. तो socio-economic development भी होगा, साथ ही कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसे भी इंश्योर की जाएगी, एनवायरमेंट को बेहतर किया जाएगा, लोगों की लाइफ को सेव किया जाएगा. Okay. So all these things, socio-economic development like education, health and all other things will be improving. They have especially talked about lives
maybe during the disaster management, during the any such epidemic or pandemic, it will be very much helpful. कंट्री की सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए during various you can say that during the Balakot strike or surgical strike, again our satellites have been phenomenal there. They have been very much helpful there. So it can also help in improving our security scenario. Then pursuing peaceful exploration of outer space, stimulation of public awareness and scientific quest. तो जो आउटर स्पेस है उसका पीसफुल एक्सप्लोरेशन को परस्यू करने का भी एम रखता है हमारी स्पेस पॉलिसी। साथ ही साथ जो पब्लिक अवेयरनेस या साइंटिफिक क्वेस्ट है उसे भी बढ़ाने का एम रखता है हमारा स्पेस पॉलिसी 2023। देन वी कैन सी कि स्ट्रैटेजी क्या क्या अडॉप्ट की गई है, कि व्हाट हैज बीन द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस। सबसे पहला है इंकरेजिंग एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर। हमारे कंट्री के स्पेस प्रोग्राम को इनहांस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाएगा। देन आफ्टर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन अगेन टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। जो हमारी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है, जो जैसे प्राइवेट सेक्टर्स है, उन सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो हमारा विजन है कि हम स्पेस कैपेबिलिटीज को इनहांस करें थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस, वो चीजें पूरी हो पाए। Then after promoting space related education and innovation including support to space sector startups। okay? तो यहां पे हम स्पेस रिलेटेड एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इनोवेशन और स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करना। जैसे आप बात करते हो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की या NSIL की, तो दे हैव अ की रोल टू प्रोमोटिंग ऑल दीज थिंग्स। देन आफ्टर using space as a driver for overall technology development nurture scientific temperament in the society। ठीक है, तो हमारे कंट्री में साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक क्वेस्ट, इन सभी को भी प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी है इंडियन स्पेस पॉलिसी में। आप देखोगे इंडियन स्पेस पॉलिसी की अगर आप विजन को सिंपली याद रखते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉमन पीपल लाइफ। What do we need here? Socio-economic development, security, protection of environment, protection of lives। So this is one thing which is touching the common people. So Indian space policy is more oriented towards people welfare। Okay, of course we are trying to look at the exploration of space and all other things, but the main intent remains here about the welfare of the people। Okay, normally this, why I am emphasizing upon this, जब भी आपको इंडिया में स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली आप पे ये पूछा जाएगा कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। So this is one thing which you have to keep in mind। Okay, then see this simple thing that the Indian space policy 2023 aims to reduce the space between common man and space technology। जो इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी है वो कॉमन मैन और स्पेस टेक्नोलॉजी के बीच के जो स्पेस है उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है एंड डिस्कस विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज इनविसेज्ड बाय द इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो अब आप इंडियन स्पेस पॉलिसी का जो विजन है, जो स्ट्रेटजी है, उसको यूज करके इसको आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखो अब जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन का तो यू कैन हैव सर्टेन फैक्ट्स विद इट। जैसे आप पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यू कैन पुट सर्टेन फैक्ट्स टू स्टार्ट विद कि इंडिया की जो स्पेस जर्नी रही वो किस प्रकार से रही है। तो यू कैन मेंशन हियर कि आप मार्स मिशन के बारे में बता सकते हो कि इंडिया ने मार्स मिशन कंडक्ट किया था और ऐसा करने वाली फर्स्ट अटेम्प्ट में से कंप्लीटली पूरा करने वाली पहली कंट्री है वर्ल्ड में। फिर आप लूनर मिशन के बारे में बता सकते हो कि वी हैव बीन इवन एबल टू रीच टू द मून्स, वी हैव बीन एबल टू इवन वी ट्राई टू लॉन्च इवन द रोवर देयर, वी वेर सक्सेसफुल इन पुटिंग एन ऑर्बिटर देयर। या फिर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि इंडिया इज वन ऑफ दोज 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच इज हैविंग इट्स ऑन नेविगेशन सिस्टम। या फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि वी हैव this record satellite launch where we have done more than 104 satellites in orbit using a single PSLV launch vehicle। तो आप इसमें से कोई भी फैक्ट लेकर या एक दो फैक्ट लेकर इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो कि अभी तक इंडिया की जर्नी कैसी रही है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले आप इनसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप बता सकते हो कि कैसे ये स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो कॉमन पीपल से रिलेटेड रहा है और स्पेशली इंडियन स्पेस पॉलिसी कैसे इस स्पेस को ब्रिज करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इन चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।